ऋणविमोचन अङ्गारकस्तोत्रम्। स्कन्द उवाच ऋणग्रस्तनराणां तु ऋणमुक्तिः कथं भवेत्। ब्रह्मोवाच वक्ष्येऽहं सर्वलोकानां हितार्थं हितकामदम्। अस्य श्री अंगारकस्तोत्र महामन्त्रस्य गौतम ऋषिः अनुष्टुप् अंगारको देवता मम ऋणविमोचनार्थे जपे विनियोगः ध्यानम्। रक्तमाल्याम्बरधर शूलशक्तिगदाधरः चतुर्भुजो मे शगतो वरदश्च धरासुतः। मंगलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदः। स्थिरासनो महाकाय सर्वकर्मावबोधकः। लोहितो लोहितांगश्च सामगायी कृपाकरः। धर्मराजः कुजो भौमो भूमिजो भूमिनन्दनः। अंगारको यमश्चैव सर्वरोगापहारकः। सृष्टिकर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदः। भूतिदो ग्रहपूज्यश्च वक्त्रो रक्तवपुः प्रभुः। एतानि कुजनामानि यो नित्यं प्रयतः पठेत्। ऋणं न जायते तस्य धनं प्राप्नोत्यसंशयम्। रक्तपुष्पैश्च गन्धैश्च दीपधूपादिभिस्तथा मङ्गलं पूजयत्वा तु मङ्गलेहनि सर्वदा। ऋणरेखाः प्रकर्तव्याः दग्धाङ्गारैस्तदग्रतः। 27 नामानि पठित्वा तु तदन्दिके ताश्च प्रमार्जयेत् पश्चाद्वामपादेन संस्पृशन्। एवं कृत्वा न सन्देहो ऋणहीनो धनी भवेत्। भूमिजस्य प्रसादेन ग्रहपीडा विनश्यति। येनार्जिता जगत्कीर्तिर्भूमिपुत्रेण शाश्वती। शत्रवश्च हता येन भौमेन महितात्मना। सप्रीतायां तु भौमोऽद्य तुष्टो भूयात् सदा मम। अंगारकमहीपुत्र भगवन् भक्तवत्सला। नमोऽस्तु ते ममाशेष ऋणमाशु विमोचय। भूमिपुत्र महातेज स्वेदोद्भव पिनाकिनः। ऋणार्तस्वां प्रसन्नोऽस्मि गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते। इति ऋणविमोचन अंगारकस्तोत्रम्।